फर्स्ट ईयर में कुछ 80 करोड़ का बजट मेरे हाथ में था, तो हाथ पैर काँप गए काफ़ी, क्योंकि लगा कि यार अभी तो कॉलेज में अपन 10 रुपए की मैगी और 6 रुपए की चाय के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे, और ये 80 करोड़ रुपए का अचानक से बजट हाथ में आ गया है। What is the idea behind Wootz.Work and what is the business model? When I was getting into the nitty-gritties of those machines, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि why is it that we are importing these machines? So what we are doing is basically building supply chains for engineering products from India to the world. You were able to compete with China, and what were the unique things you were able to bring? The manufacturing base in India is unparalleled except in China. One of the facts is that today India is manufacturing and exporting in more categories than China. China, which is growing older, वहाँ पे ये costs are going through the roof. I think a big emphasis from the government has been Make in India as well. So how are you seeing that play on the ground? There is definitely a wave where people really feel proud of Make in India, right? लोगों को अच्छा लगता है कि यार मैं अपनी मशीन के ऊपर Make in India लगा रहा हूँ. It's sort of plays that enlightening factor, which was sort of missing. What are the upcoming opportunities in this manufacturing sector? तो सॉफ्टवेयर हम लोग इतना कर चुके हैं और हार्डवेयर में we are just getting started. This is a great opportunity wherein if these two come together, that's probably the biggest opportunity for sure. Hello everyone, welcome to yet another episode of the Chapter 1 podcast. आज मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट है हिमांशु नियाल, who has been one of my closest friends and for the longest time since the IIT days. And actually वो देहरादून से ही है जहाँ पे मैं भी था, and then also from the same coaching classes, and then we eventually became roommates. And उस टाइम भी मुझे लगता था कि he will do something great, and he had the potential to be a CEO of founder of a really large startup. And I think he's on the right steps. तो आज हम उसकी जर्नी के बारे में देखेंगे कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचा. And it's in a very unique space जो कि बहुत ही difficult है मेरे हिसाब से to get into. He is doing a large industrial B2B where he's manufacturing large machines for large vendors and also exporting them to UK and other countries in Europe. So you'll learn a lot about his journey. So welcome, Himanshu. Maybe you can tell us briefly about yourself. We all want to know how you got there. थैंक यू भाई. तो यार मतलब जर्नी तो काफ़ी सिंपल ही है. स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी, फिर उसके बाद सोचा कि IIT जेई करते हैं, तो पेरेंट्स ने बोल दिया कि यार जेई तो बेकार होता है, जूनियर इंजीनियर क्यों बनना है तेरे को लाइफ में. तो मुझे भी लगा कि यार ये तो सच में कुछ गड़बड़ है. थोड़ा और इधर उधर हाथ पैर मारे तो पता चला ये कुछ और ही चीज़ है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये तो इससे इंजीनियर बन. कुछ था नहीं, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में कर रहे थे, तो काफ़ी बढ़िया लगता था देख के कि यार ये तो बढ़िया फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं. तो बस भर दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोई क्लू था नहीं. आई थिंक यही है. ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस काफ़ी थॉटलेसली ले लिया अर्ली स्टेज कैरियर में, but trying to make the most of them and trying to be a little more smarter about making decisions as we grow. Luckily, सेकेंड ईयर में जाते जाते सीनियर्स ने एडवाइस दी कि थोड़ा इंडस्ट्री जाके समझ ले, तो इंटर्नशिप करने चला गया. तो L&T मुंबई में एक इंटर्नशिप मिली, वहाँ चला गया. तो उधर जाके काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला. पहली बार एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखी, एकदम लार्ज स्केल डिफेंस वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहाँ पे. और जो गाइड मुझे मिला उसने भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट दिया हाथ में. सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसके लिए कुछ मैंने एक छोटा सा काम किया था. तो काफ़ी अच्छी फील आई अंदर से. बट वही वापस कॉलेज में आए तो फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई. फिर से इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने लग गए, फिर से कुछ प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा था. फिर से थर्ड ईयर में एक इंटर्नशिप के लिए फिर से मैकेनिकल में एक इंटर्नशिप ट्राई करी, तो मैंने किर्लोस्कर में एक इंटर्नशिप करी. वो भी हार्डकोर मैकेनिकल रिलेटेड थी. दे वर मैन्युफैक्चरिंग लार्ज टर्बाइन एंड मोटर्स फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग था. वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हाई इम्पैक्टफुल काम करने को नहीं मिला, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इतना हाई स्केल, हाई कैपेसिटी, लार्ज स्केल मशीनरी बनते हुए देखी. बहुत ही फैसिनेशन हुआ. मतलब समहाउ अंदर ही अंदर मेरा फैसिनेशन ग्रो हो रहा था. सोचा नहीं था मैंने कि मैं मैकेनिकल में ही कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मे बी PhD करने चले जाएंगे और तो कुछ दिख नहीं रहा है मैकेनिकल का, वरना कोई मैनेजमेंट कोर्स करेंगे या किसी फाइनेंस की जॉब में चले जाएंगे. तो वो इंटर्नशिप कंप्लीट करके आया वापस कॉलेज में, फिर प्लेसमेंट्स वगैरह शुरू हो गए. तो उसके बाद काफ़ी मन में एक दुविधा हो गई कि यार
मैं 5-10 मिनट भी हम लोग अगर किसी से फालतू की बात कर लें तो उसमें टाइम वेस्ट करना बुरा लगता है। लेकिन मैं 3-4 साल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और कैसे मैं इसको छोड़ के कुछ और करने लग जाऊँ। तो आई गेव इट अ शॉट। मैंने कहा यार मैकेनिकल में ही जॉब ढूंढते हैं। सीरियसनेस बहुत थी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा थॉट दिया नहीं था कि पैसे का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ट्राई किया, जो इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज थी वहाँ पे अप्लाई किया। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, आईटीसी में जॉब लग गया कैंपस से डे वन पे। सो दैट वाज अ लकी ब्रेक फॉर मी। आईटीसी में भी जाते ही अनदर लकी ब्रेक दैट हैपेंड वाज कि उसी वक्त आईटीसी वाज गेटिंग इनटू पुटिंग अप ओन प्लांट्स। उसी वक्त दे हैड प्लान्ड अ ह्यूज केपेक्स फॉर एक्सपैंडिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड स्टेपल्स डिवीजन जो है आईटीसी फूड्स का, उसमें मेरे को एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रोल दे दिया काफ़ी जल्दी। वहाँ पहुँचे, फर्स्ट ईयर में कुछ 80 करोड़ का बजट मेरे हाथ में था। तो हाथ पैर काँप गए काफ़ी, क्योंकि लगा कि यार अभी तो कॉलेज में अपन 10 रुपए की मैगी और 6 रुपए की चाय के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे, और ये 80 करोड़ रुपए का अचानक से बजट हाथ में आ गया है। तो चैलेंज भी काफ़ी बड़ा था, बट एक्साइटिंग भी था। तो वहाँ से फिर प्लांट्स लगाने शुरू किए। प्लांट्स के लिए मशीनरी लगानी शुरू की। कंस्ट्रक्शन करना था बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का। तो उसका एक्सपीरियंस मिलने लगा। एंड ऑब्वियसली आईटीसी, द काइंड ऑफ टैलेंट दे हायर इज एब्सोल्युटली लाइक द टॉप लेवल। तो उन लोगों के साथ काम करने में, मेरे बॉसेस के साथ काम करने में इतना ज़्यादा सीखा उस पीरियड में कि ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि यार कुछ ना कुछ तो कर लेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इतना भी ग्रिम सिचुएशन नहीं है जितना मैंने सोचा था कि यार ये तो मैकेनिकल में कुछ होता ही नहीं है। 3-3 4-4 लाख रुपए के पैकेज लगते थे लोगों के, तो काफ़ी डर भी लगता था। बट वो काम करके बहुत कॉन्फिडेंस आया। वहाँ पे काम करते-करते यार एक चीज़ ये भी रियलाइज़ हुई कि देयर वर सो मेनी मशीन्स दैट वी वर बाइंग फ्रॉम इंडिया। एंड उनको प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज़ करते थे मशीन्स को। बट काफ़ी सारी ऐसी मशीन्स भी होती थी जिनको हम लोग इम्पोर्ट करते थे बाहर से। तो लॉट ऑफ इम्पोर्ट्स आई वाज़ हैंडलिंग। बट व्हेन आई वाज़ गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ दोज़ मशीन्स, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि व्हाई इज़ इट दैट वी आर इम्पोर्टिंग दीज़ मशीन्स? लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी था कि यार इसमें क्या है, अपन भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमने भी प्रोसेसेस पढ़े हुए हैं, वेल्डिंग, मशीनिंग, ये वो यही सब प्रोसेस हैं, तो ये मशीन यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती? तो अ, उसी सॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी में 4 साल आईटीसी में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए अक्रॉस इंडिया। और फिर एकदम फुलिशनेस में कि यार अब मशीन खुद ही बनाते हैं करके मैं आईटीसी का जॉब छोड़ दिया और एक मशीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू करने लगा मैं कुछ सीनियर्स के साथ, जो कि खुद भी एक्स आईटीसी थे। तो उस बिजनेस में घुसे। तो एकदम जंकयार्ड वॉर्स देखते थे हम लोग डिस्कवरी में बचपन में, बिल्कुल वैसी हालत थी। एक छोटे से टूटे फूटे शेड में अपन घुस गए, लोहा काटने लगे, वेल्डिंग सेल्डिंग करवाने लगे, मशीनें बनाने लगे, डिज़ाइन करने लगे। तो काफ़ी फन एक्सपीरियंस था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस था। स्क्रैच से एक मशीन को कंसेप्चुलाइज़ करना, डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। वो फ़ैसिनेशन जो था मेरा, जो मैं सोच के घुसा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो काइंड ऑफ ट्रू होने लगा। तो एक बड़ी सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आने लगी अंदर से कि यार आई एम क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर। सडनली आई हैव अ मशीन दैट इज़ वर्किंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू। तो वो एक फीलिंग बहुत अमेजिंग थी जब आपने खुद एक अपने हाथों से मशीन बनानी शुरू की। तो वो सब किया 4 साल। उस बिज़नेस में भी काफ़ी सक्सेस मिला, बट काफ़ी सारी लर्निंग भी मिली। क्योंकि मेजरली हम लोग उस वक़्त डोमेस्टिक मार्केट में ही काम करते थे, और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे थे। तो एक चीज़ जो मुझे खटकने लगी वो ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग तो मेरे आस-पास बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो बहुत सालों से कर रहे हैं, और मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन नहीं कर रहा था। हमारी इनोवेशन वाज़ मोस्टली ऑन इंजीनियरिंग फ्रंट। तो मुझे फिर ये समझ में आने लगा कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्यों एफर्ट वेस्ट कर रहा हूँ, व्हेन आई हैव सच टैलेंटेड पीपल एंड सच टैलेंटेड कंपनीज एंड सच एक्सपीरियंस्ड कंपनीज आर ऑलरेडी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग। तो आई डोंट नीड टू जस्ट रीइन्वेंट दैट सेम व्हील। तो फिर रियलाइज हुआ कि यार मेरा वैल्यू एडिशन कुछ और एरिया में भी हो सकता है, और जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग करता रहूंगा तब तक मैं वो फुल पोटेंशियल पे उस चीज़ को नहीं ले जा पाऊंगा, उस कंसेप्चुलाइजेशन को, इंजीनियरिंग को। And that is how sort of the idea of my current startup, Wootz.Work, was born in my mind. उसके बाद भी, बिजनेस के बाद भी, मैंने 1-1.5 साल एक अमेरिकन स्टार्टअप के साथ काम किया which was into sustainability, and I was working as a head of engineering for that business. We were trying to design
machines which could convert agri wastage into packaging material for the industry, which was quite innovative. And it's sort of an up and coming technology, which is definitely going to change the world in some years, but probably at an early stage today. So 1.5 साल वहाँ पे काम किया, side by side I was refining the idea of work. And it was only last year that I met my co-founder also at that startup. हम लोगों ने साथ में काम किया और उस आइडिया को थोड़ा फर्दर रिफाइन किया, एंड देन लास्ट ईयर वी स्टार्टेड वुड्स वर्क, एंड बस उसी जर्नी में लगे हुए हैं अभी. That's awesome. So I think before हम Wootz.Work में जाए and fully understand करें कि क्या business model है, and this insight was very useful कि कहाँ से पहले mechanical engineering in IIT वहाँ पे study किया. You really liked it. I remember कि you were the department rank opener. So you had Yes, explicitly chosen mechanical engineering by choice, even if you were able to actually get other branches as well. So you had the correct. passions consciously or subconsciously about this field. And then तूने फिर ITC में observations करी कि you can actually manufacture in India. There are both manufacturing and engineering skills in India. उसके बाद फिर जब तूने manufacturing company खोली तो you also found your own expertise कि engineering is our expertise and where you can bring value. So this is very insightful कि how working in bigger companies you get a lot of learning and you are able to iterate and refine what is actually a problem in the ecosystem and get to the root of it. So Woots के Absolutely. बारे में बात करते हैं कि finally what is the idea behind Woots.Work and what is the business model and how and where did you start this? तो यार यही था, जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो रही है ऑलरेडी कंट्री में, देयर आर सो मेनी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स. I didn't realize, yeah, I didn't understand why I needed to do manufacturing again, right? So what we are doing is basically building supply chains for engineering products from India to the world. And we are trying to do it on three levels. We are trying to make it fast, we are trying to make it simpler, and we are trying to make it more reliable for international clients to work with Indian engineering companies. That's our basic motto. Fundamentally, the message is ki if you want to build something out of India, you really don't need to manufacture it yourself. There is enough capacity available to build high quality products and take them to the world today. फंडामेंटल इंसाइट तो यही थी कि देयर इज सच अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया. Obviously, if you compare it with China, it's not obviously at that scale, but the width of the manufacturing base in India is unparalleled except in China. मतलब जितने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं और एक्सेप्ट चाइना विच इज ऑब्वियसली मच लार्जर इन स्केल, किसी और कंट्री में नहीं होते. ये एक फंडामेंटल इंसाइट थी. सो ये क्लियर था कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक कंट्री में बन सकते हैं, राइट. इफ यू लुक एट कॉम्पिटिशन विच इज प्रोबेबली मैन्युफैक्चरिंग में आज की डेट में थाईलैंड है, वियतनाम है, ताइवान है, ऑब्वियसली दीज आर अहेड इन सम टर्म्स compared to India. लेकिन एक चीज क्लियर थी कि these countries are not going to be able to fulfill the needs of the whole world, right? Couple of more insights were कि China, whether you talk about the geopolitical reasons or you talk about the demography of the country, has sustained to remain the manufacturing sort of giant for the world. लेकिन वहाँ की जो population है has sort of obviously we read through, right, started declining, people are turning older, while India at the same time has a demographic advantage. We're generating more than 10-15 lakh engineers and technical people in the country every year. तो इतना बड़ा engineering talent pool दुनिया में इस वक्त कहीं और generate नहीं हुआ. तो ये भी क्लियर था कि इनपुट भी अवेलेबल है, हम कर भी रहे हैं. सो देयर इज एक्सपीरियंस दैट इज ऑलरेडी देयर. व्हाट वाज मिसिंग इज जस्ट द स्केल, राइट. And unless that scale comes, the economics of manufacturing in India may not get justified. But as we see in the news also, the world has started looking towards India also, right? Ki geopolitically, India is pretty much friendly with most countries across the globe. The population of India, the people of India are very well acceptable across the globe, right? And the young population is reaching out to the world. They're appealing much more. Obviously, we have a language advantage as well, right? Compared to China. So opportunity बहुत evident थी. फिर पार्ट ये था कि यार मिसिंग क्या है फिर, why have we not been able to do it in the past? तो उसका एक बहुत क्लियर आंसर तो नहीं है मेरे पास आज की डेट में, लेकिन कुछ कुछ चीजें बहुत क्लियर थी कि देर आर
over the whole journey that India has had in manufacturing, maybe after 1991 जब से economic reforms हुए थे, उसके बाद से small segments of this manufacturing sort of started growing in India. So it's not a very old phenomena, right? I'm not saying कि these 30 years were not enough for us to grow, but at the same time there was huge competition from China, right? But वो जो 30 years का एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा है, वो एक्सपीरियंस इन द लास्ट डिकेड इफ यू सी हैज स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द सेंस कि एक तो छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत डेवलप हो गए हैं इंडिया के अंदर, लेकिन कोई भी लार्ज प्लेयर उन कैटेगरीज में नहीं बन पाता बिकॉज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरली बहुत रिकरिंग यूज वाले प्रोडक्ट्स नहीं होते, राइट? यू वुड बाय अ पैक ऑफ चिप्स एवरी डे बट यू वोंट बाय अ मशीन एवरी डे. केपेक्स साइकिल्स आर 4 to 5 year साइकिल्स. तो वहां पे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी कैन नॉट बी द सेम एज D2C ब्रांड्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड. तो उसमें साइकिल्स टू ग्रो आर मच लॉन्गर. बट टू आर एडवांटेज ऑल्सो कि लास्ट 10 years में the number of categories that we started manufacturing also expanded. Difficult to absorb, लेकिन one of the facts is that today India is manufacturing and exporting in more categories than China. Scale may be 10-20 times lower, but the number of categories that we are exporting has sort of gone more than China now. तो वो भी एक एडवांटेज था. बट हाँ, जो मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा था वो डिसएडवांटेज यही था कि हम लोग एक लोअर स्केल से चालू किए, तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल था. चाइना ऑलरेडी हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज दैट मूव्ड रियली रियली फास्ट. सेकंड डिसएडवांटेज था कि बी ऑनेस्ट एजुकेशन सिस्टम में भी काफी एक ये प्रॉब्लम रहा है विच आई वाज पॉइंटिंग आउट अर्लियर आल्सो, कि इतनी जेनेरिक इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज इतना ज्यादा है. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लोकल कॉलेजेस में, काफ़ी सारे लोकल कॉलेजेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मच बेटर सिखाई जाती है कंपेयर टू, एटलीस्ट मैं अपने कॉलेज की बात करूँ अगर, राइट? कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन मशीन्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, बीइंग क्लोजर टू द इंडस्ट्री, उनको नॉलेज ज़्यादा रहता है कि मशीन्स कैसे काम करती हैं. वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. अनदर डिसएडवांटेज वाज कि विच इज़ अ रिलेटिव डिसएडवांटेज, कि बाकी के लुक्रेटिव ऑप्शन इंजीनियर के लिए बहुत थे. तो इस तरफ कोई ज़्यादा देख नहीं रहा था इस अपॉर्चुनिटी की तरफ. एंड बट इफ यू लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है. वेरी टैलेंटेड पीपल आर स्टार्टिंग टू कम हियर, बट अगेन दे कम विद अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस. उनको आइडिया नहीं रहता कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, या फिर कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिटीज वो हाथ गंदा नहीं करना चाहते, राइट? यार मशीन बनानी पड़ेगी, वो फैक्ट्री में गंदे फ्लोर पे खड़ा होना पड़ेगा, हाथ गंदे हो जाएंगे, चोट पटक भी लग सकती है. easier to work on a computer at home or sitting in office. तो वो चैलेंज रिलेटिवली इजी नहीं है पिकअप करना किसी के लिए भी. तो जो भी टैलेंट इस इंडस्ट्री में अभी आ रहा है, मोस्टली मैं देखता हूँ कि नॉन आईआईटी से ही आ रहा है, जो रियली इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, एंड फैंटास्टिक टैलेंट इज कमिंग अप. तो वो एक डिसएडवांटेज पहले रहा है, जो कि अब स्लोली एंड स्लोली इट्स गोइंग अवे. लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल आई सी यंग कॉलेज ग्रेजुएट्स आज की डेट में मशीन्स बना रहे हैं कॉलेज से निकल के, विच probably didn't happen earlier, right? Plus the way the overall transactions that happen in the industry have changed. The red tapeism that has come down. कंपनी चालू करके मशीन बना सकता है, किसी को बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके ट्रांजैक्शंस हैंडल करने के लिए, सीएज अवेलेबल है आपके अकाउंट्स हैंडल करने के लिए. ऑल दोज एडवांटेजेस आर स्लोली कमिंग अप. And I think this will have an exponential impact on the growth of manufacturing in India. तो दैट्स यही है. ऑसम. ये एक चीज़ तूने बोली कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें एक तो एज कम्पेयर टू अदर जो हमारे स्टार्टअप्स आते हैं इन सॉफ्टवेयर D2C ब्रांड्स, एक तो साइकिल बहुत ज़्यादा लेंदी है, 4 to 5 year साइकिल है, तो ग्रोथ रेट वैसे ही दिखता है. सेकेंडली right. आई वुड ऑल्सो अज्यूम कि कैपिटल इंटेंसिव होगी. स्टार्टिंग में यू हैव टू पुट अ कैपिटल टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर दीज गुड्स. So how did you come up with कि ये वाली category है where within manufacturing where you can actually win, so we can compete with China, because that is seems to be the main competitor, right, for any Right. Indian manufacturing business. तो तूने कैसे Absolutely. identify किया कि ये वाला category को target करेंगे and we will actually be able to win against China? तो यार इसमें भी आई थिंक काफी सिंपल था. बेसिक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आपको मेक श्योर कि इट्स वायबल फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट्स.
राइट? कहाँ पे आप सिग्निफिकेंट कॉस्ट एडवांटेजेस एंड क्वालिटी एडवांटेजेस कस्टमर्स को पे। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे सप्लायर्स थे फॉर द लिमिटेड कस्टमर बेस इन इंडिया कि इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है कि वेरी नेचुरल चॉइस हमारे लिए था कि एक्सपोर्ट मार्केट ही खोलना है। डोमेस्टिक मार्केट इज ओपन टू अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, एनीबडी कैन सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट में अभी भी डिफिकल्ट है कंपनीज के लिए घुसना बिकॉज देयर इज regulations, there are certifications required, every country has a different engineering standard. ये सारी की सारी चीजें जो हैं, this knowledge has not spread into the industry. Goods is into a category which we have sort of defined as a light engineering goods category, right? Light engineering goods category is something wherein the value addition of manpower is much, much more compared to the cost of material that goes into making those goods. That is how we define the category of goods. So we're not limited to one particular machinery or one particular expertise. We don't claim to be experts of any one particular field, to be honest, because that expertise lies with our manufacturers. All these pockets of expertise, somebody is an expert in food manufacturing machines, somebody is an expert in chemicals, somebody is an expert in warehousing, automation, somebody knows a lot about construction machinery. So this expertise is spread out in very small, small pockets. No one player can have the expertise of all these categories. So it's very difficult if you want to become a manufacturer in a wide range of machineries and technology. So we don't claim to be experts in one particular field. Our extent will depend on the expertise of our manufacturing partners to bring in that expertise. The expertise that we bring in is generic engineering when it comes to knowing the standards of manufacturing required, standards of engineering required for a particular territory. What does it take to make that technology successful? What are the quality parameters acceptable within those different geographical areas for machines to be acceptable? That is the expertise that we bring in, and that is how we try and help our manufacturing partners with our expertise to make their machines export worthy if they already are not, right? That's what we do. So we play in a large number of categories, which I already mentioned, and maybe even more categories. So every time we come up with a new verticals like food, chemicals, construction, what we try and do is we try and grow deeper into those territories, into those applications, and bring in more and more manufacturers with us and take their products to the export market. Got it. तो कोई एग्जाम्पल कैटेगरी है जैसे फूड जिसमें यू वर able to really compete with China? And what were the unique things you were able to bring? Was it cost, जी quality, or expected time of delivery of the product? सर, इसमें दो चीजें हैं, बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट में इस पार्ट को रखता हूँ कि क्वालिटी में एक एडवांटेज इंडिया के पास आज ये है बिकॉज द स्केल इज नॉट एज बिग एज चाइना, राइट? सो द स्केल एट विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल क्वालिटी बेटर देन चाइना टुडे, राइट? सो वो एडवांटेज एक हमारे पास है ऑलरेडी। चाइना इतना बड़ा मार्केट है, वहां पे इतनी डाइवर्स रेंज ऑफ क्वालिटीज मिलती है दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एक टॉप मैन्युफैक्चरर, ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरर कौन है और poor quality manufacturers on you can't differentiate, right? But in India, the stage and scale at which we are, it's easier for us to make interventions at the quality level. That's part one on quality. So वो control on the cost front also, I think ये काफी बड़े extent तक, again I can't generalize across the industry, but काफी बड़ा misconception है which has come from our past कि हम लोग चाइना के comparison में competitive नहीं है, राइट? बिकॉज लाइट इंजीनियरिंग कैटेगरी जो मैंने तुम्हें डिफाइन किया अभी, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स आर गुड्स जहां पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर एंड द कॉस्ट ऑफ मैन पावर और द वैल्यू एडिशन ऑफ मैन पावर in the ultimate cost is higher, right? So the cost of manpower actually plays a defining role in the cost of these products. And if you compare the cost of manpower today between China and India, right, the skilled manpower today in India is probably 25% or 20% of the cost that it is in China, right? It's a supply and demand kind of thing. आज की डेट में इंडिया में इतनी सप्लाई अवेलेबल है ऑफ इंजीनियर एंड स्किल्ड लेबर एंड इट्स ग्रोइंग प्रीटी फास्ट, राइट? तो कॉस्ट हमारे काफी कॉम्पिटिटिव है। चाइना विच इज ग्रोइंग ओल्डर, वहां पे ये कॉस्ट आर गोइंग थ्रू द रूफ। वहां चाइना की कॉस्ट एडवांटेजेस उन कैटेगरीज में ज्यादा है जहां पे वो स्केल अचीव कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, व्हेन यू स्टार्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एट अ स्मॉल स्केल, you can't match the costs of the same countries, Vietnam, Taiwan, China, in
2-3 years. So that will take a long time. But light engineering goods category में बहुत ही straight forward है. Cost China के कम है is a thing of the past. In most categories of light engineering goods, India is actually much more competitive, and India is actually a better quality control. Also because of lack of absence of a lot of counterfeit products. राइट मार्केट्स चाइना जैसे मार्केट्स में इतने काउंटरफीट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं कि आपको कंट्रोल करना कि द मोटर दैट यू आर बाइंग द सेंसर यू आर बाइंग द मशीन्स etc are absolutely original, or whether you will be able to find those in the local market for servicing, after sales, maintenance is very difficult to do, right? And the scale at which they manufacture, they don't have that flexibility. But India ka ecosystem offers you high quality components, right? And we are trying to make that as a standard that, we will manufacture goods with high quality standards. We will give you goods with components that are available in your local market, high quality goods, the best in the world. And cost of manpower is already low. So we are anyway going to be very competitive compared to any country in the world. We are probably the most competitive in this sector in the world. That's amazing कि we can actually beat China on cost because हमारे पास ज़्यादा labor है and it's growing day by day. Then there is quality aspect क्योंकि बहुत ही controlled suppliers हैं, so you can actually audit and validate all the parameters. And then if you build in more expertise, so you can actually deliver on the expectations of the customer. तो बहुत ही And fascinating I है and think it's करेक्ट वन मोर पॉइंट आई विल ऐड इज कि जो हमारी अभी सप्लाई चेन है ना वो इतनी कॉन्वोल्यूटेड नहीं है. ट्रेसेबिलिटी इज वेरी गुड इन इंडिया में कि यार आप एक कोई गैस्केट फ्लैंज बना रहे हो या वॉल्व बना रहे हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सोर्स ऑफ द ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड गेट दोज पार्ट्स. वो ट्रेसेबिलिटी इतनी अच्छी है आज की डेट में दैट यू आर श्योर दैट इफ यू आर बाइंग दिस पार्ट फ्रॉम, यू कैन बाय द पार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल आइटम मैन्युफैक्चरर, or you can easily make sure that it's an original part. तो वो counterfeit products ज़्यादा अभी इंडिया में spread नहीं हुए हैं, and we are helping control that part also. So that's we've got awesome. good traceability in the supply chain. Cool. तो अभी actually ये भी discuss करते हैं कि from the last 8 to 10 years, I think a big emphasis from the government has been Make in India as well. So how are you seeing that play on the ground? Is Make in India helping these manufacturing companies, and also is it boosting demand from Indian market itself? How is that playing? Like how is the Indian government policies helping in this sector? तो यार आई थिंक दो लेवल पे तो बहुत ही क्लियर है. एक तो है साइकोलॉजिकल लेवल पे, राइट? देयर इज डेफिनेटली अ वेव वेयर पीपल रियली फील प्राउड ऑफ मेक इन इंडिया, राइट? लोगों को अच्छा लगता है कि यार मैं अपनी मशीन के ऊपर मेक इन इंडिया लगा रहा हूँ. इट्स सॉर्ट ऑफ प्लेज दैट यूनाइटिंग which was sort of missing, right? In the international market, especially where we were not really confident of pushing out a brand. Today, there is a common brand that you can push out. कि यार ये make in India है. So that definitely helps. Second, जो है, I think make in India was also more of a demand driven thing, right? कि market में definitely indigenization की wave बहुत time से चल रही थी, right? What the government did was gave it a name, again unified that feeling across the market, and gave the people a reason why they should buy from India. Otherwise, this wave of manufacturing was anyways growing, and obviously the government जो भी systems like GST जो simplification हो गया है taxes का, exports have become easier, right? All those are efforts that the government is making to make sure that doing business in the country becomes easier, manufacturing in the country becomes easier. Obviously, there are a lot of subsidies today, right? Like the production linked incentive schemes that have come up. There are pros and cons that you will always hear, but at a larger level, very clearly it is just growing the excitement in this industry. And I think there could not have been a better time to be in this industry than today. And that is what I would say to like budding engineers. If you are a mechanical, electrical, electronics engineer, today is the time when you should actually make a switch and, focus on this industry and do something great. This is the time. Right. I couldn't agree more क्योंकि I think हमारे circle में भी it's I think very much neglected. So a lot of people go into software engineering कि we will be building software for both Indian market and SaaS products for the West. But ये वाला जो segment of manufacturing is such a key aspect, both as an opportunity कि सारे engineers हम लोग we can actually do something great, and then it's a huge component to India's GDP growth as well. So from both Exactly. aspects, this is both an opportunity as well as something where you'll get rewards.
significantly higher than any other sector at this point. So बिल्कुल what's disproportionate returns आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, वो very clear है. exactly? And there is already an example. We have seen this with China. That has been their Exactly. playbook for the last 40 years. And we are perhaps like 10 years behind them in a way. बिल्कुल. So what do you see, Himanshu, as the ki agle next biggest roadblock? Yeah, what will help Woods to grow by 10x? What is the challenge that you are currently working on? I think yeah, challenges तो काफी सारे हैं. Whatever I say, China is not down and out. Obviously, they are still large. They're still growing, right? So we are just becoming big boys now in this industry. Competitive advantages को identify करके उन चीजों के ऊपर play करना सीख रहे हैं. And I think that is what we have to learn. In these early days, a lot of planning that is missing, right? हम लोगों को planning में challenges रहते हैं, हम लोगों को project management में challenges रहते हैं. Some of the commitments that we make to our clients in the international market to be met, right? Those are challenges that we have to learn to deal with, because when you're making machines, things can go wrong at any stage, right? But the way you come back and the way you can actually correct those mistakes, move on, and still meet your timelines, right? Still meet your commitments in performance, timelines, costs, etc. ये सब चीजें अभी भी इंडस्ट्री में काफी सारी सीखनी बाकी हैं, हम लोगों को भी सीखनी बाकी हैं. एंड आई थिंक चैलेंजेस आर हियर ओनली. आई थिंक ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने के जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं वही बाकी हैं. बाकी तो वी विल ऑलवेज हैव टू compete with international players, but we're just getting started and we're learning that. So, Himanshu, can you also talk about what are the upcoming opportunities in this manufacturing sector? Ab to AI bhi aa raha hai and software is making progress. So, how do you see the next 5 to 10 years play out in this industry? ग्रेट क्वेश्चन यार. मतलब आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग अभी ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, एंड सॉफ्टवेयर में वी हैड सच अ वास्ट एक्सपीरियंस, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर द होल वर्ल्ड ऑलरेडी फॉर सो मेनी इयर्स. आई थिंक ये जो दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉफ्टवेयर कंबाइंड, ये which probably nobody else has been able to do, right? Maybe US has been able to do in the larger scale. Like if you think about aeroplanes, right? There is a very tight integration of hardware to software. If you look at MacBooks, right? Very tight integration between the hardware, great quality engineering and the software, right? So software हम लोग इतना कर चुके हैं और hardware में we are just getting started. This is a great opportunity wherein if these two come together with, and especially with generative AI, the way it's growing, I see that as like a daily part of a part of my daily activities. I see myself using generative AI all the time. तो ये opportunity तो बहुत बड़ी explode होने वाली है, I think in the coming days. That's probably the biggest opportunity for sure. That's awesome. I think जब मैं भी अपने job start कर रहा था, so I used to work in data center software and we used to always talk about this hardware software integration, which Apple has really nailed it. कि they really optimize the hardware with the software with their M1, M2, M3 chips and so on. And similarly, I think Siemens and Philips ये सब बहुत करते हैं in their machines. So that's incredible. Examples भी हैं ऐसे successes के, right? Companies like Grey Orange, Adverb, etc. The way they've built their hardware and software, that's a great example for upcoming companies, inspiration for us as well, right? कि काफी अच्छा software integration with their hardware has made them really, really successful brands and companies today. One last question. So what keeps you happy and motivated in this industry or in this business? What do you enjoy on a daily basis? And I think problem solving is what keeps me busy and motivated every day, right? Problem solving in the sense that there is always ways to improve, always opportunities to improve. Small improvements add up to large, significant improvements in your products, in the way the customers use it. And I think that's the key to the engineering businesses that we are building, that, all these small changes will kind of play a large exponential improvement in the lives of our customers. And doing that day in and day out with my team is probably the most enjoyable thing that I do. That's awesome. I think true engineering कि एक problem solving है and then iteration है, there's feedback from the customer and then you solve that problem and it gives you a lot of fun every day कि ये impact हो रहा है, which is helping not only the customers You and can then the see it. customers, right? Correct. And you can see it, right? It's a pretty quick
feedback mechanism. You quickly manufacture something, rapid prototyping is available. What improvements are you able to get with software integration that I was talking about? मेरे हार्डवेयर के परफॉर्मेंस में, एनर्जी एफिशिएंसी में, हाउ software plays a significant role with a quick line of code, how my hardware keeps improving every day. It's an amazing thing to see and gives a lot of satisfaction when you see that upfront or in everyday life. Amazing. Amazing. So thank you for joining on this podcast. Thanks everyone for watching this episode. If you have questions, do leave it in the comments for Himanshu and we both will try to answer it. And this was very, very insightful. It's a very important topic for Indian entrepreneurs to learn about manufacturing and this industry. I wish and hope that a lot of people will watch it and actually get inspired to start their own businesses. Thank you, Himanshu, for coming onto this If podcast. are any budding mechanical engineers who are really interested in doing something, mechanical, electrical engineers who really want to build something, we are here. Please get in touch. Awesome. I will link Himanshu's LinkedIn profile in the description. So please reach out to him if you want to join the fun and very impactful company that he is building.